ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल जूम सेशन में, जहां पर हम लोग जो बेसिक डी फाई के जो कोर क्वेश्चंस हैं, जो मेजर पॉइंट्स होते हैं कोई भी डी फाई प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो चीजों को हमें बारीकी से समझना चाहिए, उसके बारे में ये पूरा सेशन होने वाला है। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है। आज मैं इसको होस्ट करने वाला हूं और हमारे साथ आर्क डीफाई, जो कि हम पिछले 7 महीने से इसको दिलो जान से कर रहे हैं और बेनिफिट्स ले रहे हैं सभी लोग, उसकी एक ट्रेनिंग एकेडमी है। ठीक है, जहां पर ये पूरा सिस्टम एजुकेशन के ऊपर चलता है, मोटिवेशन के ऊपर नहीं चलता है, एजुकेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, बहुत सारा जानकारी रहेगी, जिस कारण से आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो वो क्या क्या चीजें आपको जानना है और उनको कैसे अब्सॉर्ब करके, अंडरस्टैंड करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उन्हीं चीजों को बताने के लिए हमारे साथ मिस्टर जोश हैं, जो कि एकेडमी के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर में से एक हैं। ठीक है, सो वो इंग्लिश में पूरा प्रेजेंटेशन देंगे। जस्ट इन केस अगर किसी को भी समझ नहीं आया तो मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में ट्रांसलेट करने की, बट फिर भी अगर, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि एक फ्लो में चल रहे होते हैं तो उस फ्लो को तोड़ना भी ठीक नहीं रहता है। सो मैं आप सबके सहयोग से मैं वेलकम करूंगा। आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर जोश एंड हैंड ओवर दिस स्टेज टू मिस्टर जोश। ओवर टू मिस्टर जोश। Okay, thank you, Mr. Crypto Guru. Yeah. Okay. Hi guys, my name is Josh, and I am the co-presenter here from ARK Defai. Okay. Now today I won't go too deep into the presentation. We'll split it into 3 parts. Okay. And today mainly we'll focus on what is the V3 5 core test. Okay. So guys, before when we enter the presentation, okay, I want to ask you guys one question. Okay, today if we are investor, okay, when we are investor, what determine a DeFi project is worth us participating? What makes a DeFi project good, the best for investor view? Mr. Jeff, do you want to translate? यस, Okay. दोस्तों, आज जो बहुत जो सबसे बड़ी बात है क्रिप्टो के अंदर, सो आप एज अ इन्वेस्टर के तौर पे आप किसी भी डी फाइव प्रोजेक्ट को पार्टिसिपेट करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले क्या चीजें आप देखना पसंद करते हैं? वो इज इट वर्थ पार्टिसिपेटिंग, मतलब वो पार्टिसिपेट करने लायक है कि नहीं है, वो कैसे आप पहचानते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। Okay, यस brother. मिस्टर। So it all comes down to two things when we are investor and we are looking for something to invest in. Okay, we want to look for something that is obviously very safe. Okay, something that is sustainable, where our money, when we put inside, we know it's safe, that it can continuously give us money every day. Okay, because here in the investment world, not even if in blockchain or in the traditional world as well, we want to choose something that is fair to ensure safety of our investment. Okay, so this is how the V35 core test help us solve. ओके, बेसिकली जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो सबसे पहले दो सवाल आते हैं, क्या ये सेफ है कि नहीं है? ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल है कि नहीं है। ठीक है, ये दो चीजों को हम लोग मेजरली हम लोग देखते हैं। सस्टेनेबल का मतलब, जब हम कोई सिस्टम में एंटर करते हैं तो हमको वो पैसा देता रहे, कंटिन्यूअसली देता रहे, वो मायने रखता है। ओके। Okay, so what I mean by safety or long term, okay, here in the crypto world, what we want to look at is, can it prevent rug pulls or black box manipulation? Or for sustainable, can it actually have a sustainable token issuance? Or is it just governed by hype and influencer and airdrops only? ओके, सेफ का मतलब यह है कि वो सिस्टम बेसिकली एंटी ट्रेन मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके अलावा उसके अंदर कोई बैकडोर का रास्ता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उस वो मैकेनिज्म कोई इंडिविजुअल
तो नहीं मैनेज कर रहा है, ये भी हमको देखना जरूरी है। यस। Okay. So like I said, this is where the V35 core test comes and help us solve this issue. Okay. Now, the V35 core test consists of 3 security issues and then 2 sustainability issues. ओके, 5 चीजों को हमको इवेलुएट करना है, जिसमें 3 चीजें सिक्योरिटी पे आती हैं, जो सेफ्टी को फोकस करता है, और 2 चीजें सस्टेनेबिलिटी, यानी वो कंटिन्यू चलता रहे, उस चीज के ऊपर फोकस है। तो ये 5 चीजों को आप ध्यान से सुनिए। ओके। Okay, so now let's go ahead and look at what is the security issue first. Let's go through security breakdown. Okay, so the first question is the liquidity pool locked? Now, why is it important that our liquidity pool is locked? Okay, basically, it is to prevent like project team or project leader to take out all the money in liquidity pool and run away. Okay, you can imagine it like this. Today we are a shop. Okay, the liquidity pool is a shop. We go to this liquidity pool to buy and sell. Okay, we go there, give them USDT, they give us token. We give them token, they give us USDT. Okay, so now if everyone in the whole market go to this liquidity pool and then buy a lot of this token, there will be a lot of USDT in the liquidity pool shop, right? So with many USDT there, if not locked, project leader take all the money away, we go back to the liquidity pool, we want to sell our token, but there is no USDT to give us. So this is why liquidity pool has to be locked, to prevent something like this from happening. यस, बेसिकली सबसे पहला जो होना चाहिए वो लिक्विडिटी लॉक होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी लॉक होने का मतलब ये है कि कोई रातों रात उसको लेके नहीं जाएगा। इसको एक दुकान की तरह आप मान के चल सकते हैं, एक शॉप की तरह मान के चल सकते हैं, जहां पर आर्क टोकन भी रखे हैं और यूएसडीटी भी है। मान लेते हैं कि कुछ जैसे इनिशियली जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ आर्क टोकन बाय करने के लिए गए, वहां पर आर्क टोकन देकर के यूएसडीटी और यूएसडीटी देकर के आर्क टोकन ही लिया जा सकता है। तो मान लेते हैं इनिशियली अगर मान लो या मार्केट में जाकर के सब लोग आर्क टोकन खरीदने के लिए गए, तो दुकान पे क्या होगा, यूएसडीटी इकट्ठे हो जाएंगे। और मान लेते हैं कि किसी दिन वो दुकान लेकर के भाग गया, तो क्या होगा कि आपके पास आर्क टोकन जाएंगे जिसको आप कहीं कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए लिक्विडिटी पूल लॉक रहेगा, तो आपके पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रहेगी कि वो लेकर के भाग जाए। Okay. Yes. Okay. So I will actually show you guys how to go and check if a project liquidity pool is locked. Give me a second, yeah. अब आपको लिक्विडिटी पूल लॉक है कि नहीं है वो कैसे चेक करना है, आपको लाइव आपको दिखाया जा रहा है। Okay, brother and sister. We can see here we are going to ave.ai. Okay, this is a website we all can use to go and check for this liquidity pool lock. Okay, so from here let's say we go to search our token here ARK. Okay. ओके, ave.ai या ave.ai पे हम लोग गए हैं, जहां पे आप सर्च कर सकते हैं ARK सर्च बॉक्स में डाल करके, तो आपको ARK का यहां पर दिख जाएगा। Here has a lock here, right? We can see that it is 100% in the black hole. ओके, यहाँ पे नीचे एक देखिए ऑप्शंस के अंदर LP लिखा हुआ है। LP को अगर आप क्लिक करेंगे तो 100% ब्लैक होल पे ये जा रहा है, यानी इसका कोई इंडिविजुअल ओनर नहीं है। Okay. Yes. So this Yes. is one of the ways you can go and check this liquidity pool, whether it is locked. So let's say if you want to look at another project, let's say we talk about origin. Okay, we have an example here. If we go to origin here, we can see there is no lock here. That means this project has no pool lock. Okay, there is risk of rug pull.
So ओके let's go back to this. यस, ऐसे आप कोई भी Oh, प्रोजेक्ट को आप avi.com पे जाकर के avi.ai पे जाकर के आप जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उनको आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जहां पर टोटल लॉक्ड है वो एक सेफ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट माना जाता है। यस okay. So, oh sorry. Now once we already assess what is liquidity pool law and how do we differentiate, okay? What is the next thing we want to look at? The next thing we want to look at is this minting contract being open source, okay? ओके जैसे Okay. ही आप जैसे पहला वाला आपने देखा कि लिक्विडिटी पूल लॉक्ड है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको देखना है क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है मिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि टोकन में मिंट होने वाले हैं, ये मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है ओपन सोर्स है कि नहीं है उसको भी आपको देखना है। Okay, so now we come to this minting contract. What is minting contract and why it has to be open source? Okay, minting contract is where the project they go and mint new tokens, they create new tokens. Okay, and यस open source means today I open everything for you to see. Okay, from head to toe, every single thing I let you see to go and check. Now, main motive for this is to prevent this backdoor mechanism. Okay, backdoor mechanism means today if they have this backdoor, they can keep minting a lot of token and then sell it. Okay, creating unlimited token. With unlimited token, the price of the token will only keep going down. Okay, you can see here in this example. यस ओके ये मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट चेक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि V3 के अंदर जो मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट है या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिंटिंग का ऑप्शन है तो उसको ओपन सोर्स होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि आप जैसे ये बाजू वाले ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि कोई भी आर्बिट्री यानी अपने आप टोकन मिंट करके बेशक लिक्विडिटी पूल लॉक्ड भी रहेगा तो वहां से वो टोकन बेच बेच के पैसे निकालता रहेगा, तो टोकन का प्राइस नीचे आएगा। तो V3 के अंदर ओपन सोर्स में ये सारी चीजें चेक करना बनता है। Okay. यस Now that we assess this minting contract, why it has to be open source as well, okay? Now comes to where we put our money, right? Because that's also very important. Where we put our money will determine, and the people who control the money will determine where the project goes, okay? Like in US, where people control the US dollar, will control where US go. So same concept here, people who control our ARK treasury will direct where ARK go. So do we want ARK treasury to be governed by one people, two people, or do we want entire community like in India, China, USA, everyone in the whole world that is participating here in ARK, okay, help diversify and control this treasury, okay? So this is comes to our third question. ओके सो एक तो हो गया आपका लिक्विडिटी पूल, फिर उसके बाद टोकन मिंटिंग, उसके बाद जो भी फंड्स ट्रेजरी के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, जो पैसा सिस्टम के पास है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है ये भी समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बात करें तो जैसे इंडियन रुपीज है उसको भारत सरकार कंट्रोल करता है, यूएस डॉलर को अमेरिकन गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहां पर भी जो फंड्स हैं उसको ये देखना जरूरी है कि कौन उसको कंट्रोल करता है, कोई एक आदमी है, कोई टीम है, या फिर कम्युनिटी है। कम्युनिटी का मतलब जो लोग जुड़े हुए हैं इसमें इंडिया के भी हो सकते हैं, जापान के भी हो सकते हैं, मलेशिया के भी हो सकते हैं, चाइना के भी, यानी मल्टीपल लोग अगर इसको कंट्रोल कर रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी सिग्नेटरी का ट्रांसपेरेंसी। यस Okay, so here in our third question, how we solve this transparency and multi-signature in treasury, okay, is where we use this genosive safe multi-signature. Now, this is actually the most secure and most mature standard in Ethereum ecosystem, where Olympus DAO V3 and Ethereum Foundation, they are all using this structure. Now, why? Why use this structure? Because with this structure, okay,
they want to differentiate from traditional shareholder multi-signature. They don't want to let one or two or three people control, but rather they want, which is governance first and then multi-signature second. Basically, let entire community help with governing the project. Okay. ओके, सो ये यहाँ पर जो मल्टी सिग्नेटरी का जो सिस्टम है गवर्नेंस मॉडल का, ये इथेरियम में भी ऐसा इस्तेमाल होता है, और सिर्फ V3 गवर्नेंस मॉडल के अंदर ही ऐसा होता है, जहां पर पहले क्या होता था, 2, 3, 4 मल्टी सिग्नेटरीज होते थे जो कम्युनिटी के उन्हीं के लोग होते थे, यानी जो डेवलपर टीम से ही। बट यहाँ पर गवर्नेंस के तौर पर कम्युनिटी के ही लोग यहाँ पर मल्टी सिग्नेटरी के लिए ज्वाइन, मल्टी सिग्नेटरी के लिए अलाउ किया जाता है। Okay. So how they actually achieve this is, okay, they'll be using this tally and this genosive safe. Okay, with tally they basically help us do this so-called community voting proposal. Okay, tally is a DAO governance and voting infrastructure platform. How we do is actually like this: as long as you have stake token here in ARK, you have voting right and can initiate proposal. Okay, and then you can go to community voting, and after everything has been voted, okay, they will choose randomly 9 people from community that voted for yes. Okay, and then ask them to go and sign, basically agree or disagree again to double check with the community. Now, once everyone has said okay, maybe 5 people already say yes, then only the transaction will go through. Okay, this ensures a DAO community within our entire community. Okay, this ensures that the treasury is not governed by leader or project creator, but rather the entire community is helping as well. ओके, सो यहाँ पर जो वोटिंग होता है, यहाँ पर यानी ये जो डाओ को जो डाओ है उसको यहाँ पे मॉनिटरिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, जो टैली करके, जो कि इंडस्ट्री का लीडिंग एक प्लेटफॉर्म है, जहां पे आज की डेट में दुनिया के जो टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट है वो भी इसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। जहां पर होता क्या है कि जितने भी लोगों के पास आर्क टोकन है उनको वोटिंग के राइट्स मिलते हैं। ठीक है, यानी कम्युनिटी के अंदर जितने लोग हैं जिनके पास आर्क टोकन है उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, पावर मिलता है, वो वोट करेंगे। जितने लोगों ने यस वोट किया है, मल्टी सिग्नेटरी के लिए यस वोट किया है, उनमें से कुछ लोग जैसे 7 और 9 लोग के करीब यहाँ पर उनको परमिशन मिलता है। यानी कम्युनिटी के अंदर एक कम्युनिटी है, यानी उन लोगों के हाथ में ही वो कस्टडी होती है जो कि रैंडम लोग होते हैं। उनमें से भी जब 5 लोग किसी भी चीज के लिए अप्रूवल देते हैं तभी वहां से आगे ट्रांजैक्शंस हो पाती हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी इंडिविजुअल के हाथ में या लीडर के हाथ में या क्रिएटर के हाथ में, डेवलपर के हाथ में ये ट्रेजरी का कमांड नहीं है। ठीक है, ये है टैली का प्लेटफॉर्म। ओके Okay. So now that we already assessed this project is 100% safe already, okay, if we put our money inside, we know that this project has no way of whatsoever being rug pull, and there's no way for us to be scammed. Okay, so now what we want to understand is, can the project actually last us that long? Okay, so before we enter, okay, we must first understand what is the core structure of DeFi. Okay, what is DeFi, guys? Okay, so like every mature DeFi protocol like Uniswap, AAVE, or this YFI or Link, okay, they all have something in common. Okay, they have a strong product, automated operation, and marginalized team. They don't rely on human function to control the entire project, but rather they let everything go through by smart contract. ओके, जैसे कि आपने अभी तक देखा कि जो चीजें सेफ्टी के एंगल से आपने सब चीजें पहले 3 पॉइंट आपने अंडरस्टैंड किया। अब सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम लोग अगर बात करें तो DeFi प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि आज की डेट में जो
बहुत ही पॉपुलर हैं, जैसे यूनिस्वैप वाला हो गया, या आवे हो गया, या वाईएफआई हो गया, लिंक हो गया, ये ह्यूमन इंटरफेरेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं, यानी वहां पर सब चीजें ऑटोमेटिक चलती हैं। ठीक है, तो यही डीफाई का एक सबसे बड़ा प्रोटोकॉल जिसे हम कह सकते हैं, डीफाई का ये प्लस पॉइंट है ये। Okay, so the next thing we want to understand is what is a algorithmic non-stable coin. Okay, we all know Yeah. what stable coin is and what is non-stable coin. Stable coin like USDT. Algorithmic non-stable coin is like meme token, Pepe, Doge, Trump coin. Okay, these are non-stable coin. So here in ARK, what we are doing is actually using this algorithmic non-stable coin function. Okay, Okay. where we have protocol to help us control the token. Okay. सो अभी आपको जो सस्टेनेबिलिटी की भी नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें, तो आपको दो चीजें आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, स्टेबल कॉइन वर्सेस नॉन स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन मतलब जैसे यूएसडीटी है, यूएसडीसी है, डाई है, जो जिनका स्टेबिलिटी यानी वो फिक्स ही रहते हैं। बट जो नॉन स्टेबल कॉइन है वो बेसिकली एक हिसाब से थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती हैं। ठीक है, Okay. यस, So what is algorithmic non-stable coin? It is like on-chain inflationary currency. But here we are using time and compounding interest, okay, to shift the focus from short-term price increase to holders being gaining more this compounding interest, okay? Making यस, time helping us gain more returns through this. Okay, so how we are letting time and compounding interest help us run against with the so-called inflation. Yes, the price will always fluctuate. It will go down or go up. But we as user and we as the one that is investing, okay, we are holding more quantity to outrun this inflation. ओके, ओके। एल्गोरिथम नॉन स्टेबल कॉइन को यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस ऊपर नीचे जो होता है, ठीक है, आप जैसे लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं तो आपको कंपाउंड बेनिफिट मिलता है, यानी आपके पास टोकन की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। प्राइस कम हो या ज्यादा हो, उससे आपको नुकसान नहीं होता है। जैसे इन्फ्लेशन जैसे होता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो अभी भारत की करेंसी का रेट 95 हो गया है। ठीक है, आज से कुछ महीने पहले वो 90 था, तो आपकी वैल्यू डी वैल्यू होगी, यानी आपके पैसों की वैल्यूएशन डी वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पर टोकन की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, जिस कारण से प्राइस कम भी होगा तो भी आपको नुकसान नहीं होने वाला है। यस, Okay, so how can this actually work? Okay, it's because it uses modern monetary principles. Like in the real world, when we hold this fiat currency like rupee or Malaysia ringgit, okay, it will always depreciate. Okay, throughout this time, okay, throughout these few years, we all know that this price will only the price of our fiat currency will only drop. Okay, but what we aim to is not to stop this price dropping, but rather we make our returns run faster than depreciation, so that we can earn even when the money or like the fiat currency or the token, the price of the token is still dropping. यस, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई सभी कंट्री के पैसा डिवैल्यू होता जा रहा है, यानी जो खरीदने की कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। ठीक है, बट यहां पर आपकी प्राइस को ध्यान ना देते हुए टोकन की क्वांटिटी को बढ़ाने में फोकस रखना है हम सबको, जिससे कि आपका नुकसान कहीं पर भी नहीं होगा। यस, Okay, so let's look at the difference between what art is actually doing and as well as what is the traditional way. Okay, actually we are solving the problem like traditional. They have a lot of problem with their currency, like US dollar, for instance. Over 100 years, their money keep dropping every day, keep dropping. Okay, from 100 years before,
is $1 or $100 can buy a lot of things. Now $100 can only buy you 1 meal. Okay. So Yes. this is what. Yeah. Okay. So क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पैसों की कीमत गिरती जा रही है। जैसे कि हम सब ने सुना होगा कि हमारे बाप दादाओं के टाइम पे मतलब चवन्नी अठन्नी में हमको बहुत सारा सामान मिलता था। आज चवन्नी अठन्नी की कोई कीमत नहीं है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आज से 1 साल पहले जो 100 रुपए में हम जितनी खरीदारी कर सकते थे, आज उतनी खरीदारी नहीं कर सकते हैं। सो दिन ब दिन पैसे की जो हमारी बाइंग कैपेसिटी है उतने पैसे से कम होती जा रही है। यस। Okay. So why do we need this on-chain central bank? Okay, because right now central bank, okay, like the US central bank, the problem with them is they have centralization control. Okay, they are controlled by small group of people like the Rockefeller child or anyone. Okay, anyone that has power is controlling this central bank. Okay, as well as politics and interest and abuse of trust, they all will affect this central bank. So what core guarantee can this on-chain central bank, which is our algorithmic non-stable coin, bring us? Okay, is basically everything is built on blockchain technology. Okay, so the operating logic and everything is fully open and transparent to let everyone see what is actually going behind. Okay. Yeah. So as the rules are predefined and already written in the rules, so there is no way for us to go and change and everything. यस। सो बेसिकली अब तक जो सिस्टम चल रहा है, जो पैसों का हिसाब किताब, वो कोई ना कोई सेंट्रल बैंक आपको कंट्रोल करता है। जैसे भारत में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। वहां कौन है? कुछ लोग बैठे हैं जो वो लोग पॉलिसी डिसाइड करते हैं कि भैया क्या करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, इंटरेस्ट रेट को कम करना है, ज्यादा करना है। बट यहाँ पर जो अल्गोरिदमिक नॉन स्टेबल कॉइन का जो स्ट्रक्चर है, V3 स्ट्रक्चर, वहां पर क्या है कि ब्लॉकचेन बेस्ड रूल्स पहले से लिख दिए गए हैं। यानी वहां पर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, रूल्स पहले से लिख दिए गए हैं, उसी रूल्स के हिसाब से सब चलता रहेगा। यस। Okay. So here in ARK, we have two protocols that help us solve this issue. Okay, guys. So one of the first protocol is this EM, our smart token issuance model. Okay. ओके। सो यहाँ पर स्मार्ट टोकन का इशुएंस का एक मॉडल है। जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, पहले से लिख दिया गया है और उसका एक स्मार्ट तरीका यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। जी। यस। Okay. So unlike traditional DeFi, where a lot of projects they issue token first and then seek demand and then finally they give you story, okay, to give you expectation, and then at the end they run away and we cannot do anything about it. Unlike traditional DeFi, here in ARK, what we do is we use reverse logic. But how? What is reverse logic? Okay, reverse logic means today here in ARK, we do not issue token first, but rather we form assets and then we permit token issuance. So there is no room for this so-called fairy tale. Oh, you work 100 years, no need to work 100 years anymore if you buy my token. But rather we are showing you guys, okay, we don't lie. We have proof. ओके। जनरली क्या होता है, डीफाई के नाम से जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या डीफाई के नाम से जो टोकन्स आते हैं, वो आपको पहले से तैयार होते हैं और तैयार होकर के आपको दिया जाता है और ये बोला जाता है कि ये बहुत बढ़ने वाला है, आगे जाकर के बहुत कुछ होने वाला है। बट V3 मॉडल के अंदर ऐसा नहीं होता है, जहां पर आपको रिवर्स लॉजिक इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर आपको बेसिकली एसेट को फोकस करके, यानी आपके पास एसेट बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी जैसे मैंने कहा कि कंपाउंड होता है, यानी एसेट बढ़ता जाता है जिससे आपको आगे जाकर के बेनिफिट मिलता है। यस। Okay, so how does this work? Okay, basically our logic is like this. If today
we are selling our bonds already, okay? We sold our bonds. The POL will inject the real assets into liquidity pool. Now, all the assets will be permanently locked by black hole. Then the system will allow this new token generated, okay? So it proves that if there is no asset coming in, there is no asset going out. यस, यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि बॉन्ड्स जो है ना, जो कि सोल्ड हो चुके हैं, उसके बाद टोकन का जो एलपी है, लिक्विडिटी पूल है, वो लॉक हो गया है, ठीक है। उसी के बाद ही यहाँ पर टोकन्स को जनरेट किया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर कोई एसेट नहीं है, यानी बैकिंग नहीं है, तो टोकन मिंट नहीं होते हैं। यस। Okay. So what is the key difference between this and the original V1 model? Okay, is where our minting logic, okay, is fully open source and verifiable to let everyone go and check. Okay, as well as here all our assets or additional tokens can have their on-chain asset source traced, okay, so we can check where the money is coming from, as well as there is no room for this minting first and then telling you, hey, oh, sorry, we don't have this, but we have this. There is no room for this justifying later. यस, यहाँ पर मिंटिंग का जो लॉजिक है, वो जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया, वो पूरा का पूरा ओपन सोर्स है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि टोकन पहले से मिंट किया गया और बाद में आपको क्या कहते हैं कि भाई उसके पीछे बैकिंग ही नहीं है, ऐसा बोलने का फंडा ही नहीं है। यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से ही सब कुछ डिजाइन किया गया है। यस। Okay, so what is the second protocol that help us solve this issue? Okay, the second protocol is this RBS. Okay, our dual pool mechanism. Okay, now RBS does not serve the price directly, but they rather function as like on-chain central bank style. Basically, when the market overheat, it will inhibit bubble accumulation, basically help us adjust the liquidity, okay? It does not lie in a one-time buyback, but rather it balances the capability of the liquidity pool and the treasury pool, okay? Which serves like a buffering amongst during the period of volatility. ओके, जो सस्टेनेबल मॉडल का एक दूसरा पार्ट है वो है आरबीएस मैकेनिज्म। आरबीएस बेसिकली एक मॉनिटरिंग की तरह काम करता है और साथ ही साथ ये हम कह सकते हैं कि जैसे सेंट्रल बैंक है उस तरीके से ये काम करता है आरबीएस। यस। Okay, so how does the RBS work? Basically, they will regulate by transferring excess bubble or excess flow from liquidity pool to treasury, and when the treasury will release regulatory flexibility during volatility period. Okay, meaning if the price drop, the liquidity that is excess, what they will do is actually they will release. Okay, they will transfer the excess liquidity to the treasury, and if there is volatility period, okay, they will start to release funds for this regulatory flexibility period. Okay, you can see this is an example. If price reaches 50, there's excess liquidity, they will sell tokens and then give it to treasury. And if the price drop to maybe 36 or 21, okay, there is price of volatility crashing, they will help to solve this issue. यस, बेसिकली ये काम कैसे करता है, जब मार्केट में रेट ऊपर जाता रहेगा तो लिक्विडिटी से टोकन मिंट करके लिक्विडिटी से फंड निकाल के ट्रेजरी में डिपॉजिट करता है, और जब मार्केट में वोलेटिलिटी हो जाती है, यानी बहुत पैनिक हो जाता है, रेट नीचे आता है, तो उस ट्रेजरी से फंड लेकर के टोकन बाय करके उसको स्टेबलाइज करने की हेल्प करता है। Okay. यस। So, what is the key difference between V1 and V3? Sorry. Okay. What is V1 and V3? V1 is
like previously Olympus DAO, they are using this V1 model, okay? Now, this V1, yes, it can work, but there is a lot of issue with this V1, okay? How? They have single contract, fixed floor price, and extreme volatility. Now, these are all issues, okay? Now, here in ARK, we pioneer in this V3 model. Okay, with V3, we have smart contract token minting. Okay, with our everything logic is written on chain. Okay, eliminating the need for controlling. Okay, as well as when price rises, we have this smart contract market making for to help us sell tokens, and then when it falls, help us repurchase, stabilize the entire market. Okay, as well as we have this treasury smart contract asset management, making everything open and transparent and can execute automatically via this community co-governance, as well as our contract, everything is smart iteration, okay? Meaning everything is freely assembled and can be upgraded without being rebooting, okay? So, as well as here, we are a decentralized governance. So, everything is written on chain and no required trust is in anyone. Okay, you just need to trust yourself, verify it, then all is well. यस V1 और V3 मॉडल, क्योंकि V1 मॉडल भी काफी टाइम से सक्सेसफुली चल रहा है। उसके अंदर क्या था, एक फ्लोर प्राइस इनिशियली एक फिक्स प्राइस से शुरू होता था और वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती थी, ठीक है। बट V3 मॉडल के अंदर वो सब चीजों को एलिमिनेट करके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मिंटिंग मॉडल डाल दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा प्राइस को रेगुलेट करने का भी RBS मॉडल डाल दिया गया है। इसके अलावा ट्रेजरी मॉडल को भी यहाँ पे इनफैक्ट V3 के अंदर मॉड्यूल्स डाले गए हैं। मॉड्यूल्स का मतलब एक, जैसे कहते हैं ना कि एक अलमारी के अंदर बॉक्सेस जैसे डाल दिए गए। अगर किसी भी सिस्टम को, किसी भी चीज को अपडेट करना हो, मॉडिफाई करना हो, रिपेयर करना हो, तो सिर्फ उसी चीज को ही छेड़छाड़ करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज V1 के अंदर क्या था, एक ही कॉन्ट्रैक्ट था जो कि चाहे जैसे भी है, अच्छा है बुरा है, वैसे ही रहता। बट V3 मॉडल के अंदर इसमें गवर्नेंस के थ्रू, डाओ के थ्रू उनको अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। यस Okay, so put in a very simple term, today here in V3, okay, everything is transparent and public, meaning everything is shown to you guys, okay? Nothing is behind closed door. Okay, how our EM minting contract is public, RBS is also public, treasury info and output is also public as well. Okay, there is no hiding whatsoever here in V3. Okay, as well as our governance here is multi-signature and is transparent. यस, यहाँ पर सब चीजें ट्रांसपेरेंट है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया, मिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक है, यानी ओपन सोर्स है। RBS ऑपरेशंस यहाँ पर पब्लिक है। ट्रेजरी एसेट का इनफ्लो आउटफ्लो भी ऑडिटेबल है। इसके अलावा जो गवर्नेंस है, जो कि मल्टी सिग्नेटरी वाला है, सब चीजें आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं खुद। यानी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का ये बहुत बेजोड़ कॉम्बिनेशन V3 में आपको देखने को मिलता है। यस Okay, so here we can see that it's also been audited by CertiK as well. Now, what is CertiK? Who is CertiK? Okay, CertiK is actually one of the most top CertiK is one of the top foremost blockchain, most trusted auditor in the whole world, in the blockchain world. Okay, they have audited almost 20,000 of these blockchain projects like Olympus DAO, Origin as well. Okay, now they have given us a token scan score of 95 out of 100. This represents that all the core permission related to ARK, okay, token and then the minting have all already been thrown away, to show that everything is fully decentralized. Okay. यस, सर्टिक से ऑडिटेड प्रोजेक्ट है। सर्टिक अगर बात करें तो एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ऑडिटिंग सिस्टम है, कंपनी है, जहां पर 20,000 से भी ज्यादा आज की डेट में प्रोजेक्ट्स को ऑडिट किया हुआ है। और जहां पर हमारे प्रोजेक्ट के टोकन स्कोर को 95 स्कोर मिला हुआ है, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही हेल्दी यहाँ पे
एक हिसाब से हमको स्कोरिंग मिला हुआ है. Yes. Okay. Yeah. So yeah, that's basically it for today. Okay, because we take a lot of time out of everyone's day already. So I'll stop the presentation here first. This is the first part for today, and we will continue on Wednesday. Yeah, right, Mr. Jesh, sir. यस, थैंक यू जोश. अगर आप में से किसी को अब आज का जो पार्ट, ये जो मीटिंग हुआ है, उससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं. वी आर हियर फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स फॉर क्वेश्चन आंसर सेशंस. अगर कोई चीज समझ नहीं है या फिर कोई आपको पूछना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं. अदरवाइज हम लोग वापस रेगुलर मीटिंग्स तो हमारे चलते ही हैं. उसके अलावा वेडनेसडे इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. So I think everybody is clear. So thank you, Josh, for your wonderful explanation. Clear, crisp, and transparent. So we will meet again on Wednesday, same time, same link. Till then, Okay, take care. brother, no problem. Yeah, till then, take care and have a wonderful evening. Bye bye. Thank you, Bye. Mr. Jesh. Bye bye. Thank you. And okay, Dan is also there. Thank you very much. Thank you.